Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 8th class, we are dealing with the chapter of geography, chapter number 3, mineral and power resources. Dear students, we read the definition of minerals. We also learned the classification of minerals, and later on we learned the extraction of minerals, and today we will learn the distribution of minerals. So my dear students, minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rocks. My dear students, you know that rocks are of different kinds, like igneous rocks, metamorphic rocks, sedimentary rocks. So these minerals always occur in different types of these rocks. Some minerals are found in igneous rocks. Similarly, some in metamorphic rocks, while other occur in sedimentary rocks. So all the minerals are distributed in these different kinds of rocks: the igneous rocks, the metamorphic rocks, and the sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. Metallic minerals you learned yesterday. These metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus. Plateaus you know, जिनको हम उर्दू में पठार कहते हैं. पठार ज़मीन की वो किस्म होती है जो जब हम किसी हाई आल्टीट्यूड पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर एक मैदान सा पाया जाता है. जैसे गुलमर्ग की मैं मिसाल देता हूँ आपको. पहले 10-12 किलोमीटर ऊपर ये चढ़ना पड़ता है, फिर एक बहुत बड़ा वसी मैदान है. तो इस किस्म के मैदान को इंग्लिश में प्लेटू कहते हैं, प्लेटू लैंड. तो इसी को उर्दू में पठार कहते हैं. आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, copper and nickel deposits in Ontario, Canada, iron, nickel, chromatids and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. So we learn, students, these metallic minerals are found in plateau areas of Canada and Sweden, and in South Africa. Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains. Young fold mountains contain non-metallic minerals. What are these young folded mountains? You know, the process of formation of these mountains is still continuing. The internal process takes place in the earth on daily routine. आज भी बहुत सारे माउंटेन वजूद पा रहे हैं. समंदर जो हमें नज़र आ रहे हैं, समंदर के अंदर भी माउंटेन्स पाए जाते हैं. और जो माउंटेन्स जिस भी तरह से, अगर इन अर्थक्वेक्स की वजह से, ज़लज़लों की वजह से वजूद पाते हैं, या टेक्टोनिक जो डिसऑर्डर हो जाता है ज़मीन के अंदर, उसकी वजह से
जो माउंटेन्स वजूद पाते हैं इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। These young fold mountains contain non-metallic minerals. What are these non-metallic minerals? We have also learned that, like limestone, these deposits. Despite of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. So these are the examples of some non-metallic resources. Where are these resources? These resources found, like limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples of non-mineral resources. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. The mineral fuels, यानी कि जो फ्यूल्स हम देखते हैं, दीज आर आल्सो नॉन मेटल्स, और जिनको हम एनर्जी फ्यूल्स कहते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज कहते हैं. कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड, दीज आर आल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स. So, my dear students, we learned how are these minerals distributed in rocks, in igneous rocks, in metamorphic rocks, and in sedimentary rocks. We found that these metallic minerals are found in igneous and these metamorphic rocks. We found that these limestone non-metallic minerals are found in sedimentary rocks, and we also found that these energy resources, energy minerals are also found in sedimentary rocks or the sedimentary lands. These plateaus are have importance because the non-metals are present in such areas. So, dear students, tomorrow we will learn the name of the countries from which we get these minerals. These कुदरत ने जो ये तवील कायनात बनाई है, तो इस कायनात में जो इलाके हैं, कोई इलाका फजूल नहीं है. कोई भी, चाहे पहाड़ है, समंदर है, या बाकी ये ज़मीनों के अक़साम जो हैं, हर एक जगह पे कोई न कोई रिसोर्स पाया जाता है. तो कल हम देखते हैं कि किस मुल्क में कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, किस कॉन्टिनेंट में क्या पाया जाता है, वो हम कल पढ़ेंगे. तो फिलहाल आज हमने पढ़ लिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस तरह से है, किन किन रॉक्स में ये पाया जाता है, किन जगहों पे पाया जाता है. मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में ये सवाल आया होगा. कल इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं. थैंक यू वेरी मच.